बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट क्लासेस में टेंसेस के पढ़े थे, टेंसेस में हमने प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को उर्दू में फिलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं। बेटा सबसे पहले इसकी उर्दू में पहचान लिखते हैं। हमारे पास उर्दू में जिन फिक्रों के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूं और रही है और इसके साथ वक्त का आना जरूरी है। बेटा हमने लास्ट टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही है पढ़ा था, लेकिन उसमें वक्त नहीं होता। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वक्त लाजमी। जैसे वो सुबह से लेकर खेल रहे हैं। बट यहाँ पे जो सुबह है वो हमारे पास वक्त है। उसके साथ इंग्लिश में हमारे पास स्ट्रक्चर, जो सिंपल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बेटा कंटिन्यूअस जितने भी होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा इसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते से वो यूज होती है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बढ़िया, अभी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंस और फॉर। सिंस हम कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं। सिंस जिसके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम जब टाइम स्पेसिफाइड हो, टाइम बताया गया हो, जैसे 1947 मॉर्निंग 2 o'clock। बट ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसके बाद हमारे पास 20 years। अब हमें नहीं पता कौन से 20 years, 2 hours, हमें नहीं पता कि कौन से 2 hours। तो ये क्या बेटा, पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा था, इसकी इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करें, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहे हैं। दे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन कौन से होंगे, हैव बीन और हैज बीन। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट since morning। since मैंने जैसे पहले बताया
सिंस और फॉर, ये मॉर्निंग जो हमारे पास ये स्पेसिफाइड है, हमें बताया गया है कि कब से, सुबह से, टाइम स्पेसिफिक है, तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके साथ इसी टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन। बेटा बच्चे क्या करते हैं, जो नॉट का इस्तेमाल है, यू हैव बीन नॉट, हैव हैज बीन नॉट, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल, लेकिन ऐसा नहीं करना हम लोगों ने। जो नॉट का इस्तेमाल है हमेशा हैव और बीन और हैज और बीन के दरमियान में इस्तेमाल होता है। प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। हमने जो सेंटेंस लिखा था अकॉर्डिंगली, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बट इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी होती है, इंट्रोगेटिव। जैसे सवाल है कहते हो मैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हैज या हैव, उसको सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, अगर ये ना हो तो आपका क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं कंसीडर होगा। सो हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पे एक चीज मैं शुरू में मिस कर गया कि हैज बीन और हैव बीन हम कब लगाते हैं, हैज बीन हम सिंगुलर के साथ, और जिसमें ही शी इट और अली या जो सिंगल नेम हो उसके साथ हम हैज बीन लगाते हैं, और जो हैव बीन है वो हम प्लूरल के साथ आई वी यू दे और एक से ज्यादा जो नाम हो जैसे अली एंड उसामा एक्सेट्रा। बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।